आज की सुबह लगती और दिनों से कुछ खास है। आजादी की महक से खिला खिला सा आकाश है। सच में मेरे अंदर एक अलग ही लहू दौड़ रहा है। आजादी की कद्र करो, शायद ये कह रहा है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम को देख रहे आप सभी लोगों का मैं यशी झा एवं आरव ओवलेकर सिलोनियन परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सब एक बार फिर आजादी का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। माना विद्यालय में न आज हम बच्चों की पलटन है और न स्कूल बैंड की धुन है शानदार, किंतु मन में जोश व उत्साह का लहरा रहा है सागर अपार। न भूले हैं न भूलेंगे ऐसे अनेक गुमनाम शहीदों को करना सलाम, जिन्होंने दिया हमारे मुल्क को एक नया आयाम। आज हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी मेहनत से देश को स्वयं सजाएंगे और चुनौतियों का सामना कर एक नवीन भारत का निर्माण करेंगे। कुछ इसी भाव पर आधारित ज्योतिरिंद्र टैगोर द्वारा लिखित बांग्ला गीत अब आपके सामने प्रस्तुत है, जिसे अपनी मधुर आवाज से सजाया है आईएससी की शरण्या बोस ने। शरण्या के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अथर्व पुरोहित। चौथी औद्योगिक क्रांति के नेता के रूप में उभरा है। वह दिन दूर नहीं जब वह फिर से अपना गौरव हासिल कर विश्व गुरु कहलाएगा। आइए भारत के गौरव को हमसे रूबरू कराने वाली रहना पद्मनाभन को सुने और आनंद उठाए। And greetings to one and all. Freedom is best enjoyed when it is disciplined. And which country could stand as a befitting example to this adage? Indian independence from the British came after a brave struggle fought by women and men who thought beyond their years, scope, and vision. Freedom fighters, writers, poets, and social activists who were independent statesmen and imagined a tomorrow which was impossible to envision back then. On 15th August 1947, the people of India attained freedom from the colonial rule and heralded the end of imperialism. The tricolour flag breezing in the free skies of our motherland was indeed a sight to behold. Adopted on 22nd July 1947 by the Assembly,
The tricolor was held as a symbol of triumph and unity. Its design was first proposed by Pingali Venkaya from Tamil Nadu and was offered by Mahatma Gandhi in the year 1921 to the Indian National Congress. Our national flag, popularly called as the Tiranga, is equally divided in three colors horizontally: saffron on the top, white in the middle, and green at the bottom. The Ashoka Chakra in navy blue color with 24 spokes is embedded in the middle white portion. All these colors have their own significance. Saffron symbolizes devotion and renunciation. White signifies peace, purity, and truth. And green symbolizes energy, youth, and the need to remain deeply rooted to one's soil. Thus, our national flag represents the true civilization, culture, and history of India. While the colors of the flag reeled past the eyes of the proud Indians, the atmosphere resonated with chants of Vande Mataram and Jai Hind. India did not have a national anthem when it became independent in 1947. On 24th January 1950, the Constituent Assembly officially adopted the Jana Gana Mana as the national anthem, written and composed by the Nobel Poet Laureate Gurudev Rabindranath Tagore. The freedom struggle brought the people of India together in the quest to shape their own destiny. It was rightly called the national movement, as emotive nationhood had gained momentum. It is this very essence of togetherness that we celebrate year after year. This year, the Independence Day celebrations have been scaled down owing to the pandemic, which has engulfed the nation and the world at large. The usually resplendent and expansive programs at the Red Fort have been limited to the presentation of the Guard of Honor by the armed forces, unfurling of the national flag, firing of 21-gun salute, and the speech by the Prime Minister. As we are sure in the 74th year of India celebrating its independence, let us take a leaf out of our colonial past. Back then, it was an emotionally and physically integrated India that offered the best defense and solution against internal and external changes. It was every individual whose strong sense of Indianness superseded all other identities and enabled them to achieve their goal. This applies to each one of us even today. Our commitment to national interest should guide our thoughts and actions. We must realize our potential, build on them, and create a prosperous India. As the great poet Rabindranath Tagore said, "We live in the world when we love it, and love does not claim possession but gives freedom. So, let us love our country and make it a beautiful world for you and for me. Jai Hind." हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम को अपने दिल में संजो कर रखते हैं। मातृभूमि का बिछोह कैसे दर्द बनकर स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा रचित इस गीत में दिखाई देता है। आइए सुनकर महसूस करें। इसे अपने खूबसूरत आवाज में नवाजा है आईएसी से श्रावणी सहाने ने। श्रावणी का तबले पर साथ दे रहे हैं अथर्व पुरोहित। सागरा
प्रस्तुति कौशल द्वारा ही एक भाषण अपने प्रभावशाली रूप में हमारे सामने आता है। आइए सबसे पहले हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सन 1945 में जापान रेडियो स्टेशन से दिए गए इस भाषण को आर्यन कामदार की जुबानी सुनते हैं। मुझे आशा है कि वे अपने दमदार भाषण से हम सबको अवश्य मंत्रमुग्ध कर देंगे। Good day to one and all. My name is Aryan Kamdar and today I'll be delivering a famous speech given by one of our greatest national leader and freedom fighter, Netaji Subhash Chandra Bose, which he had delivered on the 17th of August 1945, just a day before his mysterious disappearance, in order to encourage his fellow Indians after the defeat of the Indian National Army against the British forces. Brothers and sisters, a great chapter in the history of India's freedom struggle has come to a close now. India's sons and daughters living in East Asia have secured a permanent place in this chapter now. By contributing men, money and supplies to the struggle for Indian independence, you have set up a shining example of patriotism and sacrifice. I can never forget your generous and enthusiastic response to my call of total mobilization. Like a perennial spring, you sent your sons and daughters to the Azad Hind Forge and the Jhansi Rani Regiment. You gave generous donations in cash and in kind to the war fund of the provisional government of Azad Hind. In short, you have fulfilled your duties as the real sons and daughters of India. I am more aggrieved than you by the fact that your sufferings and sacrifices have not yielded immediate results. Nevertheless, they have not gone waste. They've paved the path of deliverance of our motherland and will be a perpetual source of inspiration for Indians living all over the world. The future will bless you and will speak with pride of your sacrifices at the altar of Indian independence and of your solid achievements. At this unprecedented juncture in our history, I have a word for you. Do not be disheartened by our temporary defeat. Be cheerful and optimistic. Above all, never lose your faith in the destiny of India. There is no power on earth that can keep India in bondage. India will be free, and that too soon. Jai Hind! And as we all know, India indeed got its independence on the 15th of August 1947, which is this day itself. Wishing you all a very happy Independence Day and a big salute to all the national heroes. वाह, हमेशा से शानदार वक्ता रहे आर्यन कामदार ने आज भी सबको प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे उम्मीद है कि हमारी अगली वक्ता वृंदा तोषनीवाल भी लोकमान्य तिलक के ओजस्वी भाषण से सबका दिल जीत लेंगी। Greetings to all. Today I'll be reiterating the words of Lokmanya Tilak on the Home Rule movement. I am a young spirit. Even if my body has grown old, the young spirit inside me is still alive. Whatever I am saying today is deeply felt by this young spirit inside me. The body can wilt, it can decrepit or even perish. But the soul residing in your body is forever young. Similarly, if our home rule activities slow down, then the freedom of our inner spirit cannot sustain, and no longer will it be indestructible. Then we ourselves will start believing that we are slaves. Freedom is my birthright. I will not be old as long as it is alive within me. This feeling of freedom, no weapon can cut it, no fire can burn it, no water can drown it, and no wind can blow it. We are asking for home rule and we will get it.
The science of politics teaches us that we cannot achieve through slavery what we can through home rule. Political progress is the pillar of our nation. Therefore, I want to woke your soul that yearns for this freedom, which is only possible through the political progress of our nation. Who doesn't understand the meaning of home rule? Who doesn't desire it? If I come to your house as a guest, reside there forever and do not pay heed to you when you oppose it. Would you like it? According to some people, we do not have the right to home rule. The British have been ruling over us for the past year and they say that we are unfit for home rule. If the past year of British rule couldn't make us competent for home rule, then we will make ourselves fit for it. They think it is shameless to put in efforts and save our own country. But on the other hand, England itself is trying to save the small state of Belgium with India's help. Well, isn't that shameful for them? We must save the soul of our nation from the custody of foreign rule. We have to toil for it, but it is our birthright to protect our nation. The Congress passes the Home Rule Resolution. It is not difficult to attain Swaraj. Thus, illiteracy can never be an obstacle in the way. Our uneducated brethren are equally important for the home rule of our country. Therefore, they have equal rights and we must acknowledge them. The circumstances changed in no time. Today, only one voice echoes. Now or never. Therefore, we must take this opportunity given to us by God and put in our maximum efforts for the struggle of home rule. Turn not back and confidently leave the ultimate issue to the benevolence of the Almighty. Thank you. अब जो रचना आपके सामने IAC से महिका कंदरपा लेकर आ रही है, उसके रचयिता साहित्य अकादमी व पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त तेलुगु के महान कवि श्री देवलुपल्ली वेंकटेश कृष्ण शास्त्री हैं, जिन्होंने भारत के ग्राम्य जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हुए यह गीत भारत माँ को समर्पित किया है। उनका मानना है कि हर भारतवासी के दिल की आवाज एक माँ के समान ही भारत माता जान लेती है। महिका को तबले पर साथ दे रहे हैं अथर्व पुरोहित। छू रहे हैं सफलता का आकाश, भरकर हौसलों में उड़ान। जी हाँ, विविध धर्म, भाषा, जाति का समागम होते हुए भी हमारी एकता व अखंडता
पूरे विश्व के लिए मिसाल है। एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है कि चाहे सब भारतीयों की रास्ते अलग क्यों ना हो, परंतु सबकी मंजिल एक है, हमारी देश की प्रगति। हमारी अगली प्रस्तुति है हम सब भारतीय है गीत, जिसे गा रही है IAC से श्रिया भट्ट एवं ओजस्वी माविन कुर्वे। अपने देश के सम्मान को सर्वोपरि रखने के कारण हम हिंदुस्तानियों ने पूरे विश्व में विभिन्नता में एकता की मिसाल कायम की हुई है। हम सबसे पहले भारतीय हैं और अपने वतन की आन बान शान के लिए यदि हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम कोई संकोच नहीं करेंगे। कुछ इसी भाव का गीत आपके सामने प्रस्तुत है, जिसे सुरों से सजाया है कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने।
सुलोनियन एक ऐसी शख्सियत का विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जिनके सहयोग व मार्गदर्शन की बदौलत हम इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन कर सके। जी हाँ, वे है हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती रेवती श्रीनिवासन, जिनके जोश से हमें सदा कार्य करने की प्रेरणा मिलती रही है। हम उन सभी लोगों के भी तहे दिल से आभारी है जिनके सामूहिक प्रयास द्वारा यह कार्यक्रम आप तक पहुंचना संभव हो सका। साथियों, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले हम लोगों को यह याद रखना होगा कि आज हम जिस आजाद भारत की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, उन सब के पीछे अनेक लोगों की शहादत के फसाने जुड़े हैं। इसलिए हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम एक सच्चे देशवासी होने का प्रमाण दें और अपने देश की प्रगति के लिए पुरजोर कोशिश करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमसे ही है देश भारत और भारती। फिर क्यों, आखिर क्यों सहे हम इसकी खराब आकृति? यदि हौसले बुलंद रख कदम से कदम मिलाएंगे तो एक दिन जरूर अपने देश को विश्व में अप्रतिम स्थान दिला पाएंगे।